Yes, good morning, everyone. Good morning, sir. 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 Morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Yes, good morning. So yesterday we've seen the syllabus, okay, a little bit about the syllabus, what we have to read and all those things. So from today onwards, we will start our syllabus of data structures. Okay, what we are going to do first is in the first module, first we will see some basics regarding data structures, okay, some definitions, what are the things that we are going to, what are the terminologies basically which we are going to use. We will talk about those first. Then how data structures are classified, what are primitive data structures, what are non-primitive data structures, what are linear data structures, what are non-linear data structures. Okay, these things we will see first. Then we will see array, then time complexity will be your asynchronous lecture, and then this module one will be finished. Okay, so let's first talk about data structures. Yesterday we have discussed a little bit. So anyone want to say something regarding this? What do you understand by data structures? The data structures can be structuring data in a certain unit. Sequentially. Not always sequentially. Not always sequentially. When you are talking about arrays and linked list and all those things, then you will say that data is stored sequentially. Because when we will talk about trees and graphs, their data is not stored sequentially. Their data is stored hierarchically. Tree और graph ऐसे बनता है ना? Tree and graph is made something like this. Okay, so here data is not sequential कि एक के बाद दूसरा आ रहा है ना? तो यहाँ पे data hierarchical form में है. So this term you will not use for all the data structures. Only for linear data structures like array, linked list, stack, queue. There you can say data is stored sequentially. एक के बाद एक आ रहा है. Okay. Any other So definition it is you like want a to say different regarding this? types of data stored in a specific way, and Mm-hmm. it can be processed as a single unit. Like an array can be uh, processed as a single unit, and Okay, the fine, fine, elements in an array can be accessed individually. fine. Any other? So see, can I say that data structure is nothing but just a mathematical model? Because see, Acha, for one thing you tell me first. When I say you that you are doing computer science engineering, okay, or BTech in computer science, what is the main problem that you are, you know, what is the thing that you are trying to achieve with this? For example, electronics engineers are suppose making robots or robotics. What you are doing in computer science, or what you want to do in computer science? What is the main thing that you want to achieve here? Any idea? Apart from job Develop placements. programs. Understanding Okay, the how programs. But why you write programs? Coding for making applications, different apps. Trying to solve Getting it. the desired Yes, output, sir. Milind. Yes, Milind, very good. See, when you say that you are doing computer science, what you are trying to achieve is you have to solve problems. Okay, any problem it can be. Like yesterday, we have seen some traveling salesman problem that there is a person who has to visit each of the cities, but he can only travel once to all the cities, and he has to do in minimum amount of time. So to solve that thing, you have to write a program. Okay, program is nothing but just a way to represent your problem. For example, you have some problem in your daily life. That problem can be anything. लिफ्ट से ऊपर नीचे सबसे कम टाइम में कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ, what could be the minimum distance between these cities so that I can travel much faster? Okay, what could be the path that this Zomato guy should take to reach your home faster? Okay, or any of the problems. Okay, to solve these problems, what first we do is we try to design some algorithms. सीधे प्रोग्राम नहीं लिखते, राइट? वी डोंट जस्ट डायरेक्टली राइट द प्रोग्राम. जब हाई लेवल कोडिंग करोगे और व्हेन यू स्टार्ट द कॉम्पिटिटिव कोडिंग, what first you do, you read the problem, जो भी problem statement given, and you try to derive an algorithm. Algorithm you understand, right? It's not a program, it's just how you are going to write your program. Okay, what are the steps that you are going to write? Just a kind of dry run, a dry run kind of a thing. Okay, so what you first do, you try to write some algorithms. Okay, after you have written the algorithm, you write the program or your main code.
This is the overall path that we follow. Okay, you have a problem, you write algorithm for that problem, and when you finalize the algorithm, that okay, this, because for a particular problem, a lot of algorithms will exist. How you will identify which algorithm is better? Based on the time complexity, based on the space complexity. Okay, how much time you have in your hand, how much space you want to say, because there is always a trade-off between time and space. What I mean to say is, if you try to reduce the time of your program, कि मेरे प्रोग्राम को टाइम कम लगे रन होने में, तो स्पेस बढ़ जाएगा. दैट प्रोग्राम विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस इन योर कंप्यूटर सिस्टम. इफ यू ट्राई टू रिड्यूस द स्पेस इन योर प्रोग्राम, कि मुझे मेरे प्रोग्राम में जो मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है, दैट मेमोरी शुड बी लेस. अगर आप स्पेस को लेस करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा. ओके, दिस इज, देखो सिंपल सी बात है. सपोज यू हैव अ हार्ड डिस्क, सपोज यू हैव अ हार्ड डिस्क एंड यू हैव अ सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडीज. दोनों में क्या फर्क है? SSDs are much faster compared to hard disk. Compared to hard disk, Yes, sir. but Yes, sir. Yes, sir, the cost में, space अगर is too same much. cost में, if you are getting a, suppose in the same cost you are getting a 2 TB hard disk, उसी same price में you will not get more than 250 MB of SSDs. Yes, sir. This is the difference. Okay? Yes, क्योंकि sir. अगर आप time fast कर रहे हो तो space कम होगी आपके पास. Yes, sir. और definitely if you have money तो आप दोनों चीजों को increase कर सकते हैं. But generally people don't have the sufficient amount of money for a particular problem जिससे दोनों चीजें बैलेंस की जाए. So there is a kind of trade-off between time and space. If you try to reduce time of your program, space बढ़ जाएगा, and if you try to reduce space of your program, time बढ़ जाएगा. So based on this time and space trade-off, based on the optimal need कि आपके लिए क्या जरूरी है, आपको time चाहिए या you need space, you have to design the algorithm. And when finally you finalize on some algorithm, you have to write a code for it. But the twist here comes is when you're writing any algorithm, or when you're trying to design any algorithm for any subject. For example, you are reading operating system subjects, right? Operating system you will read memory management, that how operating system allocates memory. First come first serve algorithm is there. Different types of algorithms are there. For every algorithm there will be a data structure. You cannot write algorithms without data structures. Every algorithm need one or the other data structures. Okay, all the algorithms doesn't only use int and char and float, right? You have to use arrays, you have to use stacks, you have to use linked list. So algorithms are going to use data structures. So if I talk some fundamental definition regarding these data structures, you can say that it is a kind of mathematical and logical. No, length of the program doesn't mean that space will be less or time will be less. Okay, length of code doesn't mean, I have told you yesterday also, right? अगर एक for का loop लिख रहे हो I equals to 1 to m, तो इसकी लेंथ तो एक ही लाइन की है ना, इसकी लेंथ तो एक ही लाइन की. सपोज I इक्वल टू 1 to 1000, लेंथ तो इसकी एक ही लाइन ऑफ कोड लिखा है, लेकिन चल तो 1000 बार रहा है ना. लिखा तो आपने एक ही लाइन है, लेकिन चल तो 1000 बार रहा है ना. लाइन से ऐसा कोई मतलब नहीं है. इफ यू आर यूजिंग लूप्स इन योर प्रोग्राम, अगर लूप्स के बिना लिख रहे हो तो फिर डेफिनेटली जितनी कम लाइंस होंगी उतना कम टाइम लगेगा. बट लूप्स के साथ लिख रहे हो सो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. यू कांट डायरेक्टली से आई हैव रिटन 10 लाइंस ऑफ कोड तो मेरे को सिर्फ 10 यूनिट्स ऑफ टाइम लगेगा. ऐसा नहीं हो सकता. आपके 10 लाइन ऑफ कोड में 5 लाइन आपने लूप्स लगा रखे हो, हर एक लूप 1000 बार चल रहा है, तो 5000 लाइन तो यही 5 लाइनें चल रही है. गॉट दिस मिर्जा? Yes, sir. Python, why Python is very useful? Because there are libraries in that. Okay, you don't have to write code for everything. ठीक है, इसलिए Python थोड़ी यूजफुल होती है. Python is a kind of a lazy programming language. It makes you lazy. Okay, because when you will, suppose you are doing machine learning. So in machine learning there is a concept where we have to suppose separate 2 points. यहाँ पे suppose circle लगे हुए हैं. Here suppose you have cross. You have to separate these 2 points. Which mathematical function you can use to separate these 2 parts? Any idea? Which mathematical function you can use to separate these 2? You can simply use a line, right? एक लाइन से सेपरेट कर सकते हैं ना, y equal to mx plus c वाला. So that line is known as a hyperplane. So अब ये लाइन बनाने के लिए in Python you just need one line of code. एक ही लाइन लिखनी पड़ती है because there are libraries available जो अपने आप ये लाइन बना देती है. But if you try to do the same thing in either C, C++, Java or any other language, you have to write the whole code from the very basics की लाइन कैसे बनेगी. This is the basic difference between Python and other programming languages. Okay, Python is a bit easier in comparison to machine learning and AI and all those things. Okay, so if we talk about some fundamental definition regarding data structures, you can say, acha, one more thing, when you are taking notes, okay, so because
there are no notes or PPTs. Generally, I don't use PPTs. Okay, I'll try to explain everything on the whiteboard because it's easier for the students. So whenever I'm writing, if you are taking notes of this, make sure you write date on your copies. Why? Because I think around 30 to 36 lectures will be there of data structures. ठीक है? Suppose कॉपी में सारा नोट्स लिख लिया, सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए, लास्ट में जब रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले, यू वांट टू रिवाइज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं. अब उसको लेक्चर में ढूंढोगे कैसे कि वो कहाँ पे है, राइट? यू डोंट हैव दैट आइडिया. सो हमेशा कॉपी में डेट डाल दो. फॉर एग्जाम्पल आज जो पढ़ लो उसमें डेट डाल दो. सपोज टुडे वी विल डिस्कस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, और जब रिवाइज कर रहे होगे इसको, सपोज भूल गए उस टाइम के एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, तो एग्जैक्टली उसी डेट पे जाके यू कैन ओपन दैट लेक्चर डायरेक्टली. दिस विल हेल्प यू. Okay, so always put date whatever you are doing. Okay, because इसमें जो lectures upload होते हैं सिर्फ lecture number के हिसाब से upload होते हैं. Got this? Yes, sir. Yes, sir. So if we talk about some fundamental definition regarding data structures, we can say that it is a kind of mathematical and logical model of storing and organizing data. खुद की भी कोई definition लिख सकते हो, doesn't matter. The term that you have to use here is storing and organizing data, first thing. And it is a kind of mathematical model. Okay. Why we use that in a particular way? We use that in a particular way so that it can be used to design an algorithm. It can be used to design an algorithm. We have seen just now, right? That suppose you have a problem. For that problem, you will write some algorithms. Okay, and when you have finalized your algorithm, you will write the program or the code. That code can be either in C language, Java language, or anything. But when you are trying to write this algorithm, you need some mathematical models, or you need something where you can store the data, you can organize the data, and you can process the data. Store data, organize the data, and then process the data. Even if you use these three words, it is perfectly fine to define a data structure. Okay, and that is what is known as a data structure, where you will store your data, organize your data, and process the data. Okay, and this will help you in designing any algorithm, and this is applicable for all the algorithms. Either you are reading algorithms as a subject only, और यू आर रीडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स आएंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम वगैरह आएगा बहुत लास्ट में, डेडलॉक्स वगैरह के बाद, यू विल रीड दोस. ठीक है, तो उसमें जो भी बैंकर्स एल्गोरिथम का व्हाटएवर द कोड इज और व्हाटएवर द एल्गोरिथम इज, एवरी एल्गोरिथम इज गोइंग टू यूज वन और द other kind of data structures. Either they will use arrays, or they will use linked lists, they will use stacks, something or the other they will use. Okay, so all the subjects or all the different branches or all the problems, everything is going to use some algorithms, and algorithms you can design only if you have understood data structures. This was the first thing regarding data structures. Now let's see some basic terminologies, some basic terms which are associated with data structures. Suppose there is a person. Okay, there is a person. In computer science, the real life persons or real life objects, they are known as entities. ठीक है, जिसके बारे में भी we are going to talk. Okay, जो भी real life person है, real life object है, real life entity है, anything that is known as an entity, first thing. Okay, now suppose I have some attributes. Attributes का मतलब होता है properties. I have some attributes about that entity. क्या attributes हैं और क्या property हो सकती है इस entity की? Suppose name is an attribute. Okay, age is an attribute. Attribute means properties. Suppose roll number is a attribute. Suppose date of birth is a attribute. Okay, suppose these are the attributes, and I'm going to make a table like this. Suppose the first name that I write is, say, Ravi. Second name I write, say, Aman Singh. Okay, suppose age I write as 20, suppose I write as 21, roll number is 1, number is 2, date of birth is XYZ, date of birth is ABC. Suppose this is a kind of table I have made. Now what are the terms that I'm going to talk about here? The first term is data as it is.
So what is the data? Data is simply a value or set of values. If I ask data, what do you say? What is the data? Any idea what is the data? So this tabular form Data is is data a where we collection store. of information, useful Yeah. information. See, definition, you can write anything. Yes, Milind, very good. But the word that you should use here is raw data or raw info. Why raw? Because suppose I say you that Ravi is a data and I say you 20 is also a data. ये Ravi भी एक data है, 20 भी एक data है. What is the meaning of this raw? वैसे तो as a human being you can Given. understand कि अगर रवि लिखा है तो ये किसी this is the name of a person. But if you are providing this data to a computer system, sorry, anyone saying anything? Okay. So given So if you data. have written Ravi as a person, you can say that okay, this is a name, fine. But there is a confusion to the computer system. For computer, Ravi can be a name of a person. For computer system, Ravi can be a name of a river also. Okay, Ravi की बात नहीं कर रहा हूँ, just an example. It can be name of a river. It can be name of a dish also. It can be anything. It is not clear what this Ravi is. Ravi को छोड़ो, see this 20. This 20 can be anything. This can be age of a person. This can be house number of a person. Okay, this can be the number of rotis up eat. This can be anything. This is the meaning of raw data. Okay, because data is not classified. Okay, so when you are talking about data only, just data, data simply means any raw information or fact. Anything will be a data. A picture is a data. Okay, a video file is a data. A Excel file is a data. A Word file is a data. Everything is a kind of a data itself. Okay, so it's just simply a value or set of values. You can say raw fact or anything, raw information, raw fact, anything you can say. Fine. For example, Ravi 21 XYZ, everything is a kind of data. Second term that we are going to talk about is data items. Data items. अब इसका क्या मतलब है? See, data items basically refers to a single unit of value. It is a single unit of value. इसका क्या मतलब होता है? अभी एग्जांपल से बताता हूं मैं. It refers to a single unit of value. Okay, and where items, ये जो items word है, they are subdivided into sub items. They are divided into sub items. They are divided into sub items. अब इसका मतलब क्या है? Here you know that this Ravi is a data. Fine. Aman Singh is also a data. But Aman Singh, ये जो नाम लिखा हुआ है और whatever this data is written, this Aman Singh, I can divide this Aman Singh into 3 parts. I can divide a data itself into 3 parts, जिसमें से मैं first part को बोल सकता हूँ first name, second part I can call it as middle name, and third part I can call it as last name or something like that. So okay, so if you can divide some data into sub datas or sub items, okay, these are known as data items. अब ये एक एक data item है. This is one data item. This is another data item. Okay, और ये पूरा चीज खुद में एक data था. Got this? This is a very basic difference between data and data items. Okay, when I'm talking about data items, it means that you have divided some data into, if it is possible to divide, है ना, हमेशा नहीं, if it is possible to divide, you have divided a data into sub parts, and every part will be known as an item or a data item. Okay, for example, Aman is a data item and Singh is a data item. समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? These are what we are seeing. We are seeing some of the terms and terminologies. Okay, थोड़ा सा theoretical है ये. जब तक array start नहीं होता है, things are a bit theoretical. After we will start with arrays, everything will be fine. फिर एक एक करके सारे data structures को देखेंगे हम. ठीक है? अभी थोड़े से basic terms and terminologies we have to see. Third one is the record. Third thing that we have to see is a record. So what is a record? It is a collection of data items. It is a collection of data items. अब देखो, अगर इसी टेबल को देखो, रवि इज अ डेटा,
20 is a data, 1 is a data, XYZ is a data. I can also say Ravi is a data item, obviously. 20 is a data item, 1 is a data item, XYZ is a data item. Data and data items both are same until and unless you can divide them. अगर डिवाइड नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल रवि को आप डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट डिवाइड रवि, तो रवि डेटा भी है, डेटा आइटम भी है. Aman Singh you can divide. So Aman Singh whole is a data and Aman is a data item, Singh is a data item. ये समझ आया सबको? If you cannot divide, for example 20 you cannot divide into two parts. So 20 will be a data also and 20 will be a data item also. Now if you combine all these data items, ये पूरा data item अगर combine कर दो, this will be known as a record. This will be known as a record. Okay, for example this is first record. Basically एक रो जिसमें पूरा डेटा आइटम्स का कलेक्शन रखा हुआ. दिस इज द सेकंड रिकॉर्ड और द सेकंड रो. दिस इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, कितने हो गए? 3 हो गए ना. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज अ फाइल. Okay, file is simply your single elementary unit representing attribute of an entity. अभी डेफिनेशन ऐसे रटने की जरूरत नहीं है. जो बुक की डेफिनेशन आई हैव गिवन यू दैट, बट आफ्टर आई एक्सप्लेन यू द एग्जांपल, जो समझ में आए वो लिख देना. ऐसे इसको रटने वटने की कोई जरूरत नहीं. यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग. That's fine. Okay, I'm giving you all the book definitions so that it will be helpful, but you don't have to, है ना, इसको रटना वटना कुछ नहीं है. तो समझ गए, जैसे डेटा समझ गए, what is a data, any raw information or fact. What is a data item? If you can divide data into two parts or sub parts or sub categories, that will be data item. What is a record? A collection of data items is record, right? फाइल की भी बात करते हैं अभी इसी तरह. Okay, so रटना कुछ नहीं है. Definition I am giving you, but you have to write what you have understood. Single elementary unit representing attribute of an entity. Attribute of an entity. अब इसका देखो, बुक की डेफिनेशन हटाओ, इसका सिंपल सा मतलब ये है, व्हाट वाज दिस फर्स्ट रो? रवि 21 XYZ. एक एंटिटी के बारे में ये इंफॉर्मेशन जो हमने स्टोर की थी, व्हाट वाज दैट? सॉरी, Record. दिस वाज अ रिकॉर्ड, राइट? इफ यू आर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्टिकुलर एंटिटी, एक एंटिटी मतलब एक पर्सन के बारे में अगर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करो, दैट इज अ रिकॉर्ड. Yes, sir. If you store or if you collect records of same type, same type के रिकॉर्ड का मतलब क्या? ऐसे रिकॉर्ड जिसमें नेम हो, एज हो, डेट ऑफ दिस whatever this was, रोल नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो. ओके, इफ यू कलेक्ट रिकॉर्ड ऑफ सेम टाइप्स, दैट विल बी नोन एज अ फाइल. मतलब यहाँ पे ये पूरी चीज एक फाइल है. This whole thing is a file because file is a kind of collection of records. You can say simply, this is a kind of collection of records. सारे रिकॉर्ड्स को अगर एक जगह रख दो तो एक फाइल बन जाएगा. जैसे कि ये एक फाइल है पूरी की पूरी. समझे? एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, No, so what sir. we have seen? We have seen data. Data is raw information or fact or anything that is raw, जिसका मीनिंग डिफाइन नहीं. Then we have seen data items. Okay, if you can divide data like Aman Singh into subcategories, for example, first name, second name, third name. For example, you can divide date of birth into 3 parts: date, year, month. Okay, that data will become a data item. Okay, then we have seen record. Record is nothing but a collection of data items. Then we have seen file. File is a collection of records itself. मतलब सारे के सारे records को एक जगह रख दो इस तरह, तो ये एक फाइल बन जाएगा. Next is your field. Field का मतलब कुछ नहीं है. In a file, whatever blank spaces you are filling, that is a field. I'm not giving you any bookish definition now. Okay, just understand and write in your own words. Okay, suppose this is a file. In this file, I'm filling this attribute information or this blank space. This will be a field. This will be another field. This will be third field. This will be fourth field. जब तक डेटा नहीं भरा गया, that is a field. Okay. जो अभी आपने फाइल की डेफिनेशन लिखी है ना, वही फील्ड की डेफिनेशन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बल्कि उसको स्लैश फील्ड भी कर दो. Whatever definition you have written for file, that this is a single elementary unit representing attribute of an entity, you can call it as a field also. Field is a blank space जब तक उसमें डेटा नहीं लिखा गया. That's it. Okay. Now last term comes
is information. Can you tell me the difference between data and information? So Sir, data is data Data unorganized. is a raw information and information is processed data. We can say that. Yeah, right. In simple से नाम पता चल रहा है डेटा का था raw information, right? और data was unprocessed, unsimulated. Information is basically your meaningful data. You can call information as meaningful data, right? अगर डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन आने लगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव रिटन रवि, बट रवि के साथ में ये मेंशन कर दूं दैट दिस इज अ नेम, नाउ रवि बिकम्स अ इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ डेटा, क्योंकि हमें पता है कि रवि इज अ नेम. सो इफ यू एसोसिएट एट्रीब्यूट्स of any data, attributes मतलब यही properties, name, age, roll number, any property, if you attach attributes of a data with itself, it will become an information, okay, or meaningful data. समझ गए? Any doubts, anyone? no, No, sir. sir. Also, Now we will So classify the please data explain structures. field again. Sorry. So can you please explain field again? Field beta. See, you have a file, right? File is a collection of records. यहाँ पे attributes लिखे होंगे, यहाँ पे suppose age है, anything written. When you are filling data to this field or to this box or to this block, that is a field itself. ठीक है? Suppose name में मैं यहाँ पे राम लिखने जा रहा हूँ, लिखने से पहले this was a field, even लिखने के बाद this is also a field. Field is just a part of your file, you can say simply. Field is just a part of your file for a particular attribute. For example, age मैं यहाँ भरने जा रहा हूँ, so जहां मैं लिखने जा रहा हूँ that is your field. Field समझते हो ना, भर रहे हो blank space simply. Yeah, like an element of a matrix. Any, suppose this is your matrix, ठीक है? Suppose 3 cross 3, this is a matrix. तो A of 0 0 is a field. ये एक field है जहां पे डेटा आएगा. A of 0 1 is a field. यहाँ पे डेटा आएगा. Field, simple blank space जहां भरने जा रहे हो information. Space where you are going to write the information. You can write anything you want. If you have understood what is a field, you can write anything. You can just simply write it is a place where you are going to write data. That's it. ये भी काम करेगा. Okay. Thank you, sir. Now we will see the classification of data structures. How data structures can be classified. So earlier also when you were reading PPL, you must have heard these two terms at least: primitive data types and non-primitive data types, right? Yes, ये term sir. सुने? Yes, sir. Yes, sir. Any difference you remember between primitive and non-primitive? वहां भी पढ़ा होगा ना, primitive होते हैं int, char, float. What are primitive data so structures? They are primitive जो int. पहले से defined होते हैं and non-primitive जो शायद user defined होते हैं. Yes, sir. ठीक है, but there is one major difference. int, char, float, boolean, double, है ना, बहुत सारे होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड है सारे. But एक मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. एनी आइडिया? So primitive data types are derived from non-primitive data types are derived from primitive data types. ठीक है, बट अभी भी डिफरेंस क्लियर नहीं है बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. सी, when I'm talking about primitive data types, primitive data structures ही बोल लो, कोई बात नहीं, ये भी data structures ही कहलाएंगे. इन char, float, these are also data structures. data type बोल लो, data structures बोल लो, एक ही बात है, because इसमें भी data store करते हैं, organize करते हैं, process करते हैं, तो ये भी एक data structure है. जहां पे वो definition applicable है, सब data structures है. So when I'm talking about primitive data structures, इनका सबसे पहला primitive word सुन के the first thing that should come to your mind is they directly interact with your machines. They directly interact with your machine और hardware से interact करते हैं. Interacts with machine. इसका मतलब ये है when I am writing something like this, int a equals to 10. When I am writing something like this, directly ये एक statement command pass करेगा compiler आपके सिस्टम को, आपके हार्डवेयर को, कि अब ये देखो कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा है ना बेसिक. सपोज दिस इज योर ALU और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, यहाँ पे मेमोरी होती है. दिस इज योर कंप्यूटर मेमोरी.
सबसे पहले मेमोरी में रखा होता है हार्ड डिस्क। सारा डेटा आपको ओरिजिनली हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। जब हार्ड डिस्क से उसको रन करते हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इट शुड मूव दैट फाइल. Suppose you have a game, okay, suppose you have a game GTA 5. Originally that game will be stored in your hard disk. हार्ड डिस्क में पड़ा होगा. When you run that game, वो क्या होता है, उठ के वो रैम में आ जाता है ना, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे आपके फोन में कोई एप्लीकेशन भी हो, राइट. टास्क मैनेजर, टास्क बार का काम क्या होता है, रिसेंट एप्लीकेशन शो करता है ना आपको. Yes, sir. Yes, sir. So recent Yes, applications sir. कहाँ होती है, वो RAM में पड़ी होती है. So originally everything is stored in your hard disk. When you click on that game or when you try to play that game, the operating system moves that game from hard disk to RAM. Now suppose you are playing that game a lot. आपसे यही गेम खेलते हो आप, और कोई फाइल जनरली ओपन नहीं करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, रैम से वो गेम को मूव कर देगा और ऊपर कैश मेमोरी में. देयर इज अनदर मेमोरी नोन एज कैश मेमोरी. ठीक है, जो कंप्यूटर के और पास होगी. देखो हम लोग एएलयू के पास जाते जा रहे हैं, वी आर रीचिंग क्लोजर टू एएलयू और योर कंप्यूटर. ठीक है, नाउ सपोज वो गेम ही आप खेलते हो, खाली सबसे ज्यादा गेम आप अगर 10 आवर्स इफ यू आर यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम, 9 आवर्स यू आर प्लेइंग दैट गेम, सो वो गेम कैश से भी ऊपर मूव करके रख देता है रजिस्टर्स में. ओके, क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क दूर पड़ रहा था एएलयू, हार्ड डिस्क से लाने में गेम को बार बार टाइम लगता है. तो अगर एक ही चीज आप बार बार करते हो तो हार्ड डिस्क तो रैम में जाएगा, रैम से कैश में जाएगा, कैश से रजिस्टर्स में जाएगा. Finally, what I want to say you that whatever game, file, video file, movie, anything you are playing, or even you are writing a code, finally registers have to be allocated. Okay, finally int a equals to 10 जो ये लिखते हो रजिस्टर्स में जाएगा, एक रजिस्टर बनेगा. रजिस्टर्स आर हार्डवेयर्स. ओके, अभी नहीं पता होगा, थर्ड वर्ड ईयर में जाके पढ़ोगे सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर वगैरह. बट जनरली अगर ये स्टेटमेंट लिख दे तो int a equals to 10, so what should happen in the background, एक रजिस्टर होता है. रजिस्टर इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर जिसमें 10 स्टोर करके रख दिया जाता है. वो रजिस्टर फिक्स कर दिया जाता है कि a को 10 एलोकेट होगा. फिर सपोज यू राइट समथिंग लाइक दिस, c इक्वल्स टू 10 प्लस a, यू राइट समथिंग लाइक दिस, तो दूसरा रजिस्टर एलोकेट होगा c के लिए जिसमें 20 आंसर स्टोर हो जाएगा. सो फाइनली हार्डवेयर आर स्टोर्ड, रजिस्टर्स में सारी इंफॉर्मेशन जाती है ना. ऐसा थोड़ी कुछ है कि क्लाउड पे काम कर रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग प्रोग्राम्स ऑन योर क्लाउड, राइट. प्रोग्राम्स अपने सिस्टम पे लिख लो. अगर सिस्टम पे प्रोग्राम लिख रहे हो तो रजिस्टर्स ही एलोकेट होंगे, सिस्टम का हार्डवेयर यूज होगा. सो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मींस दैट यू आर डायरेक्टली टॉकिंग विद योर हार्डवेयर. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू राइट लाइक दिस int a इक्वल्स टू 10, सो डायरेक्टली हार्डवेयर में बात होगी. हार्डवेयर जो है वो a को 10, हार्डवेयर विल एलोकेट 10 टू a. एक हार्डवेयर, वन हार्डवेयर स्पेस विल बी रिजर्व्ड फॉर a and 10 will be stored there. If I write something like this, char c equals to capital A, so what will happen, directly this will send a command to the hardware that please reserve a hardware or reserve a register basically for this c variable and give it value a. This is the meaning, this is the meaning of primitive data structure. और जितने ये सारे primitive data structures हैं, all these primitive data structures, int, char, float, boolean, they directly talk with your system or they directly talk with your hardware. Okay, then you can, if you have written this thing, then you can say okay, second difference is they are predefined in your programs, and in their operations are predefined how they are going to react. For example, if I write something like this, int a equals to small c, this will be a wrong syntax or this will be a wrong representation because primitive data structures are already predefined. We know that c is not an integer, this is a character. ठीक है, कैसे पता? क्योंकि पहले से ये सारे फिक्स्ड हैं. these operations are predefined or these operations are fixed. Okay, ये सारी चीजें बाद में आएंगी. The first thing that you have to write is they can directly talk with the system. समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, नॉन sir. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में होंगे जो डायरेक्टली सिस्टम से बात ना कर सके. ऑब्वियस सी बात है ना. सपोज यू आर क्रिएटिंग अ एरे, you are creating an array of say 5 integers. I am creating an array of 5 integers like this. तो ये जाके सीधे थोड़ी कमांड दे देगा हार्डवेयर को. दिस विल नॉट डायरेक्टली सेंड अ कमांड टू द हार्डवेयर दैट आई वांट टू रिजर्व अ स्पेस फॉर 5 इंटीजर्स लाइक दिस. नो, ऐसा नहीं होगा. एक एरे नाम का कोई ऐसा रजिस्टर एलोकेट नहीं होगा. व्हाट इट विल डू, इट विल टेक द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प लेगा. मतलब ये हेल्प लेगा इंटीजर्स की, कि जो काम इंटीजर्स के लिए करते थे वही काम करना है पर 5 बार करना है. Okay, so it will take the help of primitive data types which is integer here, and then that integer will send the command to the hardware of the system. For example, सबसे पहले 1 आया तो ये हार्डवेयर को कमांड सेंड करेगा कि 1 के लिए एक रजिस्टर स्टोर करो. इंटीजर सेंड करेगा कमांड, एरे नहीं.
फिर 2 के लिए स्पेस रिजर्व करो, फिर 3 के लिए स्पेस रिजर्व करो. ओके, बेसिकली योर इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है और इंटीजर डेटा स्ट्रक्चर, this will send command or this will talk to the hardware of the system. Array cannot directly talk to the hardware of your system. Okay, इसके अलावा सपोज लिंक लिस्ट है, there is no header file like hash include linked list.h कि लिंक लिस्ट इंक्लूड हो गया. नो, यू हैव टू मेक लिंक लिस्ट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स. ये कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है ही नहीं एग्जिस्टिंग, यू हैव टू डिफाइन देम. ओके, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स. बात करेंगे इसके बारे में बाद. ओके, दे आर नॉट प्री डिफाइंड, यू हैव टू डिफाइन देम. स्टैक्स ऐसा नहीं होता हैश इंक्लूड स्टैक डॉट एच तो स्टैक सीधे इंप्लीमेंट हो गया. पाइथन में स्टैक कर सकते हैं डायरेक्टली, बट जनरली सी सी प्लस प्लस जावा वी कैन नॉट डू दैट. यू हैव टू क्रिएट अ स्टैक. स्टैक बनाने के लिए आपको एरे की जरूरत पड़ेगी. सो इफ आई एम राइटिंग if I'm taking input in a stack, what I'm doing, first I'm sending the command to the array, and that array will send the command to the integer, right? So overall conclusion is that these non-primitive data structures, they cannot directly talk with the system. They will take the help of the primitive data types. Okay, अब इसमें भी दो categories होती हैं in non-primitive data structures, and these two categories are important from your examination point of view also. First is the linear, and second is the non-linear. First is the linear, second is the non-linear. Linear का मतलब क्या है? Linear में आएंगे आपके arrays, your linked list, stacks and queues. These are your linear data structure. इन्हें linear क्यों बोलते हैं अभी बात करेंगे. Then you have non-linear data structure जिसमें we have trees and graphs. Okay, देखो सिंपल सी बात है, why these are known as linear data structure. एक लाइन में if you want to understand, these are known as linear data structures because here data is stored linearly or sequentially like this. ऐसे ही स्टोर होता है ना, 2 3 4 sequentially स्टोर होता है. Data is stored sequentially. Non-linear data structure like trees and grass, here data is not stored sequentially. अगर 10 यहां रखा है, इसका चाइल्ड होगा 20 लेफ्ट चाइल्ड, इसका राइट चाइल्ड होगा 30. डेटा इज नॉट सीक्वेंशियली कि 10 के बाद ही 20 आ रहा है. ऐसा नहीं है, 10 के बाद 30 भी आ सकता है, फिर 20 आ सकता है, या 10 के बाद 20 आ सकता है, फिर 30 आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी हैव क्रिएटेड. ओके, सो हियर डेटा इज नॉट सीक्वेंशियली, हियर डेटा इज हायरार्किकली टॉप टू डाउन अप टू बॉटम. इसे हायरार्किकली बोलते हैं. और वर्टिकली यू कैन से हियर डेटा इज स्टोर्ड वर्टिकली like this. 40 suppose is coming here, 50 suppose coming here, like this. Okay, other differences we will see in a short while. Let's see some more differences regarding linear and non-linear because this is explicitly mentioned in your syllabus. So we will see some more differences between linear and non-linear data structure. अभी तक किसी को भी डाउट पूछना है कुछ? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, No, so sir. the first difference can be in linear data structures on linear data types. We can say that all elements are arranged in a linear or sequential order. Obviously नाम ही यही है, linear or sequential order, where each element have the successor and predecessor except the first and last element. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है that suppose I have a linear data structure like this. I have 10 here, I have 20 here, I have 30 here, I have 40. So what this statement is saying you that all elements are arranged in a linear or sequential order. एक के बाद एक, 10 के बाद 20, after 20 30, after 30 40. Everything is arranged in a linear order and every element will have a successor, मतलब बाद में एक element होगा, and predecessor, मतलब पहले एक element होगा, apart from the or except the first and last element. मतलब suppose 20 है तो 20 का एक successor होगा, that is 30, and 20 का एक predecessor भी होगा, that is 10. If I'm talking about 30, तो 30 का एक successor भी होगा, that is 40, and 30 will also have a predecessor, that is 20, except the first and the last element.
फर्स्ट एलिमेंट का प्रीडिसेसर नहीं होगा और लास्ट एलिमेंट का सक्सेसर नहीं होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस होल स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा गया. समझ आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. If you talk about non-linear data structures, you can simply say that this doesn't form any sequence. Rather, data are arranged here in hierarchical form. Data are arranged in hierarchical form, like we have seen. ठीक है, ये हुआ पहला डिफरेंस. Next, here single level is involved. Here single level is there. Single level. Here multiple levels. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सपोज इन दिस डेटा स्ट्रक्चर इटसेल्फ, ये डेटा स्ट्रक्चर देखो जो 10, 20, 30, 40 लिखा है, सिंगल लेवल है ना, सबका लेवल सिंगल, एक ही लेवल पे सब लिखे हैं. ऐसा नहीं कि 10 ऊपर लिखा है 20 नीचे लिखा है. यहाँ पे एक ही लेवल है, लेवल 1 ओनली. ठीक है, सब एक ही लेवल पे लिखे हैं, लेवल 0 कह लो. ओके, एवरीथिंग इज रिटन एट द सेम लेवल, 10, 20, 30, 40 सब सेम लेवल पे. बट इफ आई टॉक अबाउट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, 10, 20, 30, 40, 50. Here data is not written on the same level. This is your level 1. ये 10 आपका level 0 पर रखा हुआ है. सपोज 20 and 30 are stored at level 1. 40 and 50 are stored at level 2. Like this. Okay. So non-linear data structures are stored in levels. There are multiple levels. Level 0, level 1, level 2. कितने levels है वही determine करता है tree की height क्या होगी. Suppose this is a tree. So tree की height क्या होगी डिपेंड करता है कितने levels है इसमें. Got this? बाकी इसकी बात करेंगे when we'll talk about trees and graphs सबसे last modules आपके, then you will see more regarding levels and heights and all those things. But general basic idea you have got, right? That linear data structures, चाहे arrays हो, either linked list or stacks or queues, everything is at the same level. अब इसका मतलब ये नहीं कि stack तुम ऐसे bottle imagine करो कि 1 यहाँ आया था, फिर 2 तो यहाँ आया था, 3 तो यहाँ आया था, ऐसा नहीं है. स्टैक की बटल ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि 1 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, 4 आया, राइट? सब एक लेवल पे आ गए. ओके, बॉटल से गिरा के अज्यूम कर सकते हैं स्टैक में. दिस इज ओके. सो एरेज, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट सब सेम लेवल पे होते हैं. सारे डेटा सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं. एवरी डेटा इज स्टोर्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर एंड एवरीथिंग इज एट द सेम लेवल. ट्रीज एंड ग्राफ्स में ऐसा नहीं होता है. Either horizontally only or you can say vertically only also. ठीक है, vertically का भी मतलब सेम ही लेवल है एक तरीके से. तो पर वर्टिकली में अलग-अलग कॉल नहीं हो जाएंगे? देखो, there is a Yes, difference sir. between बेटा vertical and hierarchical. Vertical और hierarchical में फर्क है. Vertical और hierarchical में फर्क ये है कि if I am saying you that this is, ये जैसे 10, 20, 30 रखा है, अगर ये ऐसे रखा हुआ है 10, 20, 30, तो ये सिर्फ हमने अपनी इमेजिनेशन के लिए रखा हुआ है. कंप्यूटर सिस्टम में ये ऐसा नहीं रखा होता है, राइट? जब हम when we will talk about arrays, तो उसमें array को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके. either you can represent an array like this vertically or you can represent an array like this horizontally also. 10, 20, 30. This is our imagination only. This is our imagination only. बट ये वर्टिकली रखने का मतलब ये नहीं कि ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है. नहीं, ये सारे ही लेवल सेम है. क्यों सेम है? क्योंकि चाहे वर्टिकली रखो चाहे हॉरिजॉन्टली रखो, इन दोनों का मतलब सेम है. दिस इज द डिफरेंस. ओके सर, ओके सर. बाकी ट्रीज और ग्राफ्स में क्या हो रहा है? इफ आई हैव रिटन समथिंग लाइक दिस, इफ आई हैव रिटन समथिंग लाइक दिस, अब इसको मैं उल्टा भी कर दूं, इफ आई जस्ट रोटेट दिस आल्सो लाइक दिस, 10 यहां रख दूं, 20 ऊपर कर दूं, 30 नीचे कर दूं, इफ आई रोटेट इट क्लॉकवाइज, तब भी इनका लेवल अलग आएगा. ये एक लेवल होगा, ये दूसरा लेवल होगा, तब भी इनका लेवल चेंज होगा. एरेज, स्टैक्स और क्यू में क्या हो रहा है? इफ आई एम रोटेटिंग इट आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, दोनों का मतलब सेम है, राइट? This is the difference. There is a difference between vertical and hierarchical. Okay, that is why I have not used the word vertical. That is why I have not used the word vertical for non-linear data structures. I have used the word hierarchical. Sir, I Okay, think we have to hierarchy का keep in मतलब यही mind. होता है. एक जैसे ऑफिस में हायरार्की होती है, सबसे नीचे लेवल पे कोई है, फिर सेकंड लेवल पे कोई है, राइट? फिर थर्ड लेवल पे सपोज मैनेजर है, वो हायरार्की होती है. दैट हायरार्किकल वर्ड आई हैव यूज्ड. आई हैव नॉट यूज्ड द वर्ड वर्टिकल for the same reason in case of non-linear data structures. Okay. Yeah. Okay, Anyone sir. was saying anything? Yes, sir. I was saying ठीक है that ना? I think that Basically, all this overall work. conclusion is
वर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि उसमें लेवल्स है। सॉरी, Yeah, I was saying the same thing, that vertical is just a way of अगेन प्लीज। representation, not that it is actually vertical or linear. Yeah, yeah. Vertical is Yeah. just a way of representation. Vertical is just a way of representation. Yeah. Okay. The next difference could be, you can say that in linear data structures, data elements can be traversed. Traversed का मतलब होता है, we will see traverse in a short while, but traverse का मतलब होता है visiting all the elements at least once. Traverse कर रहे हैं. We are traversing a array. We are traversing a tree. Whenever I will say traversing, it means that I am trying to visit all the elements at least once. सारे element at least एक बार I am trying to visit. That is the meaning of traversing or traverse. So here data elements are traversed in a single run. In a single run. Obviously, अगर सबका level same है, if everything is kept at the same level, तो मैं सबको एक ही साथ पढ़ सकता हूँ. I can visit all of them like this. या फिर इवन ये वर्टिकली अगर रखे हुए हैं, then also I can visit or traverse everyone at the same time, like in a single run. ठीक है, ये देखो 10 यहाँ रखा है, 20 यहाँ रखा है, then also I can visit them or travel them in a single run. But ऐसा यहाँ नहीं होगा in non-linear data structure. अगर 10 यहाँ रखा है, 20 यहाँ रखा है, 30 is kept here, I cannot traverse them in a single run. Either I can go like this or I can go like this. Right? ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे zigzag नहीं जा सकते. राइट, यहाँ पे बहुत सारी ट्रावर्सिंग करनी होगी. अगर इसमें इसी में दो टेक्निक्स होती हैं, डीएफएस एंड बीएफएस. डीएफएस सेज दैट यू ट्रावर्स डेप्थ वाइज. अगर सपोज ऐसे ट्री बना हुआ है, सपोज अ ट्री इज मेड लाइक दिस, 2D array is linear. 2D array is linear, मिर्जा. अब 2D array को देखो, तुम्हारी इमेजिनेशन है कि 2D array तुम्हें मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है. We will talk about this. We will talk about this. You are assuming that 2D array looks like this, but कंप्यूटर में ऐसे स्टोर नहीं होता है. कंप्यूटर में 2D array भी एक 1D array की तरह स्टोर होता है. मेमोरी एड्रेसिंग या एड्रेस कैलकुलेशन, आई थिंक यू हैवंट रेड, वी विल सी दैट. बट अगर सपोज ये 2D array बना हुआ है 2 3 4 5, तो ये ऐसे स्टोर होगा. पहले 2 3 आ जाएगा रो वाइज एंड कॉलम वाइज. देयर आर टू थिंग्स known as row major order and column major order in arrays. Okay, what overall conclusion is that even a 2D array or even a 3D array or even a ND array, चाहे कितनी भी डायमेंशंस हो, ये आपके माइंड में है. कंप्यूटर के पास सिर्फ एक डायमेंशन की मेमोरी है. either you can assume computer's memory to be horizontal or you can assume computer's memory to be vertical. कंप्यूटर के पास ऐसा मैट्रिक्स नहीं बना हुआ है एरे के लिए. ओके, सो ये जो 2D एरे है, ये भी ऐसा 1D एरे की तरह ही स्टोर होता है. कैसे स्टोर होता है, we'll talk about when we'll read arrays. Okay, all the arrays are linear data structures only. Okay, now suppose you have 60 here. So there are two ways you can traverse this tree. अच्छा, ट्री और ग्राफ एक ही जैसे दिखते हैं, दोनों में फर्क ये है कि ग्राफ में साइकिल होती है. साइकिल का मतलब होता है, सपोज मैंने 10 से स्टार्ट किया, ये भी सपोज कनेक्टेड है. आई स्टार्टेड विद 10, आई रीच 20, आई रीच 30 एंड अगेन आई केम बैक टू 10. अगर ऐसा साइकिल फॉर्म हो रहा है, दैट विल बी अ ग्राफ. अगर साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है, दैट विल बी अ ट्री. और भी बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, दैट वी विल सी लेटर, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, दिस इज अ ट्री बिकॉज देयर इज नो साइकिल इन दिस. इफ देयर वुड हैव बीन अ साइकिल लाइक दिस वुड हैव बिकम अ ग्राफ. ठीक है, बेसिक अभी के लिए, रेस्ट वी विल सी लेटर. नाउ to traverse this tree we have two ways. Either you can go like this, 10 पहले देखा, फिर I see 20, then I see 60, or you can go like this, I see 10, then I see 20 30, then I see 60 40 50. Okay, but whatever you are doing, you are performing multiple runs. Here you are performing one run, second run, third run, right? Linear data structures you can traverse or see all the elements in a single run like this or like this also. This is the difference. Got this? Yes, एक last sir. difference you can say, that basically your linear data structures, array, linked list, stack queue, generally people use them for lower level programs, or you can say for software development. Simply जो software development profiles होती हैं companies में, they use these data structures only. उनको tree और graph से इतना मतलब नहीं होता है. But when you are talking about complex programs, when you are talking about, you know, AI, artificial intelligence, machine learning, deep learning, okay, or digital image processing, okay, when you're talking about these high level complex topics, people use non-linear data structures, that is trees and graphs and all those things. Okay, so any doubts, anyone? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. You have a class after this? Sir, at 11.
Okay, so let's just 5 minutes more, then I will leave you. Okay. Now let's see some any doubts. Anyone till now? किसी को doubt है कोई? चलो नहीं तो next class में कर लेंगे ऐसा क्या है. No, sir. Now No. what we are going to see next is we will see some operations like traversing का मतलब क्या होता है? What is the meaning of inserting? What is the meaning of searching? What is the meaning of merging? What is the meaning of sorting? वैसे पता है. I know you guys can understand them by the name also, right? Traversing भले ही सबसे पहले you might have heard this traversing word first time, but ये आप समझ गए, right? Traversing means visiting all each the element terms, at least once. At least once, sir. हाँ, at least नहीं, exactly once will be the word that you have to exactly once. दो बार नहीं यूज कर सकते. At least का तो मतलब हो गया दोबारा भी कर सकते हो. नहीं, you have to write exactly once. किसी भी array में in either any array, any linked list, any stack, any queue, you have to visit all the elements exactly once. Exactly once will be the right term. Exactly once. एक ही बार visit करना है. Remember that traveling salesman problem we have talked yesterday. Same problem करना है ना, उसमें भी same problem है. You have to visit each city exactly once. दो बार नहीं visit कर सकते एक city. Right? Then you have searching. Searching का मतलब क्या है? You are searching some key in the array. ठीक है? For example, you have an array like this. You have an array like this. Here it is 10, here it is 20, here it is 30, here it is 40. I want to search 30 here. So 30 will be called as a key, just whatever you are trying to search. Okay. And you try to search this 30 or you try to find this 30 in this array. If you found it, very good, mission successful. If you don't found it, if you didn't found it, mission failed. Okay, this is the meaning of searching. Sorting means either sorting in either arranging all the elements of a array, linked list, stack, queue, or any tree or graph. अच्छा, ये operations which I am talking about, these are applicable over linear data structures also. They are applicable over non-linear data structures also. When I'm saying traversing a tree, this means visiting all the elements of a tree, okay, exactly once. Okay, sorting a tree means sorting all the elements of a tree in either ascending or descending order. Okay, deleting means deleting a key or deleting an element from a data structure. Okay, I don't think I need to give you any official definition for this. You need any official definition for any of these terms? देखो, terms I am telling you, अगर किसी के चाहिए तो बता देना. For example, traversing, visiting all the elements exactly once. Second can be searching. Searching can be finding the location of any particular key in the data structure. Key मतलब जिसको ढूंढ रहे हैं. Searching, finding the location of this key in your data structure. That is searching. Then can be inserting. Inserting means adding a new record in your data structure. Record we have seen, right? पूरी की पूरी row जो लगाते थे. So adding a new record in your data structure. That is inserting. Deleting. Deleting means removing a record from your data structure. Okay. Then you have sorting. Sorting means arranging the records of your data structure in some order, either arranging or either ascending or descending. Okay, arranging everything in either ascending or descending. For example, this 10, 20, 30, 40. पहले से this is arranged in ascending order. If I want to rearrange this in descending order, I will rearrange it like this: 40, 30, 20. This is known as sorting. Sorting an element, sorting an array, sorting a tree, sorting a linked list. ये सब करेंगे हम लोग बाद में. Then last is your merging. Merging means suppose you have two sorted arrays. Two sorted arrays. मतलब one array is like this: 1, 2, 3, 4. Other arrays like this: 6 and 7. Merging means you want to arrange two sorted arrays or you want to merge these two sorted arrays. अब इनको जब merge करोगे तो final answer क्या आना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 6, 7. This is the meaning of merging. We merge after sorting always. Sort करने से पहले merge नहीं करते. अगर sort करने से पहले भी merge कर दोगे, then also after merging you have to sort them again. Okay, merging मतलब simply मिलाना. That's it. समझ आ गया सबको? किसी की definition लिखवाऊं मैं? Yes, sir, clear. Sir, understood. Yes, sir, clear. Yes, Sir, understood. Because whatever you understood is write in your terms in your exam, है ना? ऐसे कुछ रट के लिखने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है. Whatever you have understood, just write that. Okay, ठीक sir. है. Next we have to talk about abstract data types, but that we will see in the next class. So, ठीक है. Abstract data types we will see in the next class, and then we will start with arrays finally. Okay, we will start with arrays. We will see what is 1D array, what is 2D array.
how 2D arrays are represented in memories, how 3D arrays are represented in memory. Address calculation we also talk about a little bit about these things. Then we will see structures, and that's it. That is your module 1. Then module 2 we will start with linked list. Okay, sure. Thank you.